हेलो नीट स्टूडेंट्स, कंसेप्ट ऑफ नीट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन का वन शॉट लेक्चर है जिसमें हम एनसीईआरटी लाइन टू लाइन कवर करने वाले हैं। एनसीईआरटी का हाइलाइट्स जो कि आपको दिख रहे हैं, टोटल एनसीईआरटी हाइलाइट्स आपको मिलेंगे एंड देयर आर सम एक्स्ट्रा पॉइंट विच कम इन योर नीट एग्जाम एंड नो नीड टू स्टडी अनदर बुक एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज मेड फॉर द फाइनल रिवीजन फॉर योर नीट एग्जाम। तो चलिए शुरू करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। जैसा कि हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ा था, रिप्रोडक्शन के 3 स्टेज होते हैं। फर्स्ट प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। सो in pre-fertilization event we will study the male reproductive system and we will study the female reproductive system, and then gametogenesis, the formation of sperm in male and the formation of ovum in female reproductive system, which is called gametogenesis. And then we will study one more extra point which is called menstrual cycle in female, and then after this the transfer of gamete which is called the insemination we will study in the pre-fertilization event. Then after fertilization event and after fertilization implantation will occurs, then post fertilization will start and pregnancy and embryonic development, and then last parturition and lactation. So all these topics will cover in this one short lecture. So this is the summary of your chapter. For example, human are sexually reproducing and viviparous. As we know that human is mammals and mammals are viviparous and give birth to the baby is called viviparous, and which lay eggs which is called oviparous, you know it. So the reproductive event in human include formation of gamete is called gametogenesis, and then sperm in male, ovum in female. We know that the transfer of sperm into female genital tract which is called insemination. So after gametogenesis we will study the insemination, and the fusion of male gamete and female gamete we know it called fertilization. So after insemination we will study fertilization, then leading to formation of zygote, and then zygote start dividing. This followed the formation and development of blastocyst and its attachment to the uterine wall which is called implantation. So after fertilization we will study implantation, and then embryonic development in the female mother which is called the gestation period. We know that there is 9 months of gestation period in human being, so we will study the gestation period and the last delivery of the baby which is called parturition. So all these topics are the summary of this chapter. Then you have learned these reproductive events after the puberty. Reproductive event start after the puberty in male or female. So the puberty age in female is 13 year and puberty age in male is approx 14 to 15 year. So there are remarkable difference between the reproductive event in the male and female. For example, sperm formation continue even in old men, but the formation of ovum ceases in women around the 50 year. This is called the menopause. We will study in detail after some points. You have to know that the after 50 year there is no formation of ovum in female, which is called menopause. So female cannot produce baby after the 50 year. So we will study all these points: gametogenesis, insemination, fertilization, implantation, gestation and parturition in this chapter. There are some extra points which not given in your textbook. So during the erection of penis, muscle of penis become relaxed. Then another point, erection of penis is mainly vascular phenomenon कंट्रोल बाय द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम. ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम मींस आपके विल पावर पे डिपेंड नहीं करता, इनवॉलेंटरी ऑर्गन जैसा काम करता है. देन अनदर पॉइंट, इरेक्शन ऑफ पेनिस इज कंट्रोल बाय द पैरासिम्पैथेटिक व्हिच इज पार्ट ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम. वी नो दैट द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक. सो द इरेक्शन ऑफ पेनिस इज कंट्रोल बाय द पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, एंड इजैकुलेशन ऑफ पेनिस मींस द इजैकुलेशन ऑफ सीमेन बाय द पेनिस is controlled by the sympathetic nervous system. And during the ejaculation of penis the BP will increase because after the activation of sympathetic nervous system this activate the heartbeat contraction and then the BP will increase. So next important point, in male there is a Olffian duct. You have to remember that in male there is a Olffian duct which is also called the mesonephric duct. Mesonephric duct and Olffian duct present in the male which form the tubule, epididymis, vas deferens and seminal vesicles. Keep in mind these Olffian duct and mesonephric duct present in male which form the epididymis, vas deferens and seminal vesicles. As it is in female there is a duct which is called Mullerian duct, and these Mullerian duct form a fallopian tube, uterus and vagina. So this question asks Olffian duct present in simply in male and Mullerian duct present in female. Olffian duct form epididymis, vas deferens, seminal vesicles, and in female Mullerian duct form fallopian tube, यूटरस एंड वेजाइना. सो सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, देन उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देन उसके बाद हम गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे. सो लेट अस स्टार्ट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. रिप्रोडक्शन चैप्टर जो है वो हमें सिलेबस से ज़्यादा पता होता है, लेकिन जो एग्जाम में आता है वो हमें नहीं पता होता, तो हम सिर्फ उसकी स्टडी यहाँ पे करने वाले हैं. ध्यान से समझना हर एक पॉइंट को और लेक्चर को लास्ट तक देख. द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन विच इज फॉर्म बाय द पेल्विक गर्डल. सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं आपको पता है. 1 पेयर टेस्टिस आते हैं एंड देन accessory duct, glands एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया. यहाँ पे जो टेस्टिस होता है वो स्पर्म प्रोड्यूस करता है, इसलिए टेस्टिस को हम प्राइमरी ऑर्गन बोलते हैं. प्राइमरी ऑर्गन विच इज मेड फॉर द गेमिट फॉर्मेशन. जो ऑर्गन गेमिट फॉर्मेशन करता है उसको प्राइमरी बोलते हैं. एंड देन गेमिट के ट्रांसपोर्ट के लिए जो हेल्प करता है उसको हम एसेसरी डक्ट्स बोलते हैं. एंड कुछ ग्लैंड्स होते हैं और एक्सटर्नल जेनिटलिया. सो आपको ध्यान रखना है
एक पेयर टेस्टिस, accessory ducts, कौन कौन से accessory duct होते हैं वो आगे देखेंगे, कौन सा glands होता है वो भी आगे देखने वाले हैं, and there is external genitalia which is called penis, you know it. So यहाँ पे एक important point है, testis and ovary is mesodermal in origin. testis और ovary को हम एक और टर्म यूज करते हैं गोनाडल ऑर्गन. सो गोनाडल ऑर्गन इन मेल और फीमेल इज ओरिजिनेटेड बाय मेसोडर्मल. सो कीप इन माइंड, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, सो नोट इट डाउन. सो हमें पता है कि टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, जिसको हम स्क्रोटम बोलते हैं. एंड स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होता है वो 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर फ्रॉम द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर. सो लोअर बॉडी टेम्परेचर क्यों होता है ये भी हमें पता है कि नेसेसरी फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस. ये ध्यान रखना है, कई बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो स्क्रोटम का टेम्परेचर होता है वो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम क्यों होता है. सो आपको ध्यान रखना है नेसेसरी फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होने के लिए जो स्क्रोटम का टेम्परेचर है वो 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होना चाहिए. देन इन एडल्ट ईच टेस्टिस हैज ओवल इन शेप. का लेंथ होता है 4.5 सेंटीमीटर एंड विड्थ 2 to 3 सेंटीमीटर. द टेस्टिस इज कवर्ड बाय डेंस कवरिंग. तो हमें ये ध्यान नहीं रखना है क्योंकि नीट में इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता है. टेस्टिस एक डेंस कवरिंग से कवर्ड रहता है. कौन से डेंस कनेक्टिव टिश्यू से कवर्ड रहता है ये आपको पता होगा, आपने नोट्स में पढ़ा होगा, लेकिन नीट में नहीं पूछा जाएगा तो आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है. सो द नेक्स्ट पॉइंट, ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल. मीन्स की जो टेस्टिस होता है ये डिवाइडेड रहता है 250 कंपार्टमेंट में. सो आगे का पॉइंट पढ़ने से पहले हम इस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे. स्ट्रक्चर की मार्किंग आपको याद होनी चाहिए. मार्किंग मीन्स दिस इज द यूरेटर कम फ्रॉम द kidney, and then seminal vesicles which is situated behind the urinary bladder. This is called the urinary bladder. Ureter come in the urinary bladder and urethra come out from the urinary bladder. This is the vast difference. This line is called the vast difference. We will study in the structure of testis. And prostate gland is situated here. This is the prostate gland. Keep in mind, prostate gland, only one prostate gland is present. And then after prostate gland there is two gland which is called bulbo urethral gland, which is present in pair, means 2% होते हैं. And then urethra continued and come out from the external genitalia which is called the penis, and the end of penis is called the glans penis, which is covered by a thin skin which is called foreskin. And this is the testis, and this is the structure is called scrotum. Testis is present in scrotum. ये सब आपको बहुत अच्छे से पता है. So अब हम पढ़ेंगे structure of testis. The each lobule contain 1 to 3 highly coiled seminiferous tubule. We know that 250 compartment present in each testis. So look at here. This is the testicular compartment. This is the testicular compartment and divided into 250 compartment approx. These are divided into 250 compartment, and in this compartment there are some cell which is called the seminiferous tubule. One compartment has 1 to 3 seminiferous tubule. 1 to 3 seminiferous tubule. These seminiferous tubule out from the tubuli recti. These seminiferous tubule out from the tubuli recti, which is a thin tubular structure, and further combined to form a network like structure. This is a network like structure is called the rete testis. And then these rete testis come out from the 10 to 15 vasa efferentia. 10 to 15 vasa efferentia, and then these vasa efferentia combined with a highly coiled epididymis. This is called the epididymis. And then these epididymis further continue with the tube like a structure is called the vas deferens. So you have to remember this structure and series. So now here you can understand the testicular lobule which is 250, and each lobule has 1 to 3 seminiferous tubule, means each testis has 250 to 750 testicular lobule is present. And then this testicular lobule combine to form first net like structure is called rete testis, and rete testis come out from the testis with the help of vasa efferentia. Vasa efferentia present 10 to 15 in number, and this vasa efferentia further combined with highly coiled structure is called the epididymis. The function of epididymis is storage of sperm or maturation of sperm. So next, these epididymis further continue from here to vas deferens, and these vas deferens cross from posterior surface of the urinary bladder with this ureter
and come to front side combined with a gland. Pars difference come anteriorly to the urinary bladder and combined with the seminal vesicle gland and to form a duct is called the common ejaculatory duct. We will see in this diagram the ejaculatory duct. Ejaculatory duct is vas difference and the seminal vesicle duct combined to form a common duct which is called the common ejaculatory duct. ये बहुत बार नीट में आया हुआ है. जो वास डिफरेंस है और सेमाइनल वेसिकल्स है, ये दोनों फॉर्म करता है एक कॉमन डक्ट जिसको कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं. और ये कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट जो होता है वो यहाँ पे यूरेथ्रा से कंबाइंड होता है. यूरेथ्रा जो कि यूरिनरी ब्लैडर से निकलने वाली ट्यूब होती है. तो यूरेथ्रा में इंटर करने से पहले वास डिफरेंस यूरेथ्रा में इंटर करने से पहले सेमाइनल वेसिकल से जुड़ के एक डक्ट बनाती है जिसको बोलते हैं कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट. और ये कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट ओपन इनटू द यूरेथ्रा. सो द कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट ओपन इनटू द यूरेथ्रा where a prostate gland is present. Only one prostate gland present in body and urethra continue and below the prostate there is a pair of gland which is called bulbo-urethral gland. We will study detail about the all glands, seminal vesicle, prostate and bulbo-urethral next topic. Common ejaculatory duct continue with the urethra of the penis and come out from the penis. So there is only one way of urine come out from the urethra and also the sperm come out from the vas difference and fluid come out from the seminal vesicles also enter into the urethra. Means there is only one pathway which is common for the urine and sperm. So keep in mind all these points. There is one important question asked from these topics: the path of the sperm. Path of the sperm is here seminiferous tubule come out and the first structure is called retrotestis. So sperm first come in the retrotestis and then enter into the vasa efferentia which is 10 to 15 in number, and then after vasa efferentia they enter into the epididymis and sperm is stored in the epididymis for some days, and then sperm come out from the epididymis and enter into the vas difference and go through the vas difference, then combined with seminal vesicle and form a common ejaculatory duct and to the come out from the urethra. So the pathway of a sperm should be retrotestis, then vasa efferentia, then epididymis, then vas difference, then common ejaculatory duct, then urethra and come out of the body. So अब हम इसी पॉइंट्स को NCERT से कवर करते हैं. Each lobule contain 1 to 3 highly coiled which is called seminiferous tubule in which sperm are produced. Means sperm is produced inside the seminiferous tubule. Each seminiferous tubule is lined on its inside layer which is two type is called the male germ cell and Sertoli cell. Male germ cell का और एक नाम है स्पर्मेटोगोनिया. तो नाम से ही क्लियर है स्पर्मेटोगोनिया. तो आपको समझ में आ गया होगा कि मेल जर्म सेल विच इज ऑल्सो कॉल्ड स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म द स्पर्म. And another cell present inside the seminiferous tubule is Sertoli cell, and the function of Sertoli cell to secrete some hormone. You have to remember that ABP, androgen binding protein, anti-mullerian hormone, inhibin and form blood testis barrier. तो इसके फंक्शन हम बाद में डिटेल में समझेंगे. अभी आपको सिर्फ समझना है कि Sertoli cell secrete these 4 ABP, androgen binding protein, AMH, anti-mullerian hormone, inhibin which inhibit the secretion of FSH and form blood testis barrier. आपको यह पता होगा कि सीमेन के साथ कभी भी ब्लड नहीं आता है. तो पॉइंट है इन मेल जर्म सेल अंडरगो म्यूटिक डिवीजन एंड फाइनली लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म. ये हम डिटेल में पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, कैसे मेल जर्म सेल म्यूटिक डिवीजन में जाते हैं, कौन कौन से म्यूसिस होते हैं और कैसे स्पर्म फॉर्मेशन होता है, ये हम आगे स्पर्मेटोजेनेसिस में कवर करेंगे. ओके, लेकिन आपको यहाँ पे अभी याद रखना है कि मेल जर्म सेल कैन प्रोड्यूस स्पर्म. मेल जर्म सेल के पास एबिलिटी होती है स्पर्म फॉर्मेशन की. सर्टोली सेल के फंक्शंस कुछ हार्मोन सीक्रेट करना, आगे हम वो भी डिटेल में देखेंगे. एंड द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाइल सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल. जो हमारा जर्म सेल होता है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ताकि वहाँ पे मेल जर्म से ग्रो करेंगे और ग्रो करके स्पर्मेटोगोनिया जो है वो ग्रो करके प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया बनाएंगे. देन प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया में म्यूटिक डिवीजन है, वो सब आगे हम डिटेल में देखेंगे. अभी आपको सिंपल सा पॉइंट याद रखना है, सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल और यू कैन सिंपली से दैट द सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पर्म. द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूबुल इज कॉल्ड द इंटरस्टिशियल स्पेस. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. फॉर एग्जाम्पल मान लो ये टेस्टिस है, इसके अंदर कंपार्टमेंट है, ये एक ट्यूबुल हो गया, दूसरा ट्यूबुल ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल. इसके बीच में कुछ स्पेस रहते हैं, इस स्पेस को बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस. और इस स्पेस के अंदर एक सेल होता है इंटरस्टिशियल सेल या फिर इसको बोलते हैं लेडिंग सेल.
ठीक है। लेडिंग सेल और इंटरस्टिशियल सेल जो कि टेस्टिकुलर हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जिसको हम एंड्रोजन बोलते हैं, और एंड्रोजन का चीफ कंपोनेंट जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है। सो एंड्रोजन के सिक्रेशन के लिए लेडिंग सेल और इंटरस्टिशियल सेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड देन अदर सम इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल आर आल्सो प्रेजेंट इन द interstitial space. And then there are some other organ which help to the transport of the sperm is called the male accessory duct. Male accessory duct include the radial testis, vasa efferentia, epididymis and vas deferens. So हमें पता है कि यहाँ पे जो seminiferous tubule है वो उसने क्या किया, sperm production किया, और sperm production के transport के लिए यहाँ पे radial testis, vasa efferentia, epididymis and vas deferens. Seminiferous tubule, the testis open into the vasa efferentia through the radial testis. Radial testis के through seminiferous tubule vasa efferentia में open होता है, and then the vasa efferentia leave the testis. Vasa efferentia leave the testis. You can simply say that these are the vasa efferentia. And vasa efferentia open into epididymis located along the posterior surface of the each testis. And the epididymis lead to the vas deferens that ascend to the abdomen and loop over the urinary bladder. And then it receive a duct from seminal vesicle and open into urethra as common ejaculatory duct. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यूरेथ्रा में कौन सा डक्ट ओपन होता है आपको ध्यान रखना है, कॉमन ejaculatory duct. Then these duct store and transport the sperm from the testis to outside through urethra. ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार नीट में पूछा गया है और पूछा जा सकता है. The urethra originate from the urinary bladder and extend through the penis to its external opening called urethral meatus. External opening of penis is called urethral meatus. ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीट में पूछा गया है कई बार, इसके मार्किंग ध्यान रखने. तो ये देखो ये कैसा डायग्राम है, ये एक सेमिनिफेरस ट्यूबुल है और इस ट्यूबुल को ऐसे ट्रांसवर्स सेक्शन कट किया गया है. तो ये जो एंड दिख रहा है ये एंड ऐसा दिखेगा. तो ये एक सेमिनिफेरस ट्यूबुल हो गया एंड ये एक दूसरा सेमिनिफेरस ट्यूबुल हो गया, another seminiferous tubule, another seminiferous tubule, another one and another one. तो आपको दिख रहा है कि ये जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल है, इस ट्यूबुल के अंदर हमें पता है दो सेल पाए जाते हैं, एक जर्म सेल एंड एक सर्टोली सेल, जर्म सेल एंड सर्टोली सेल. इसके बाहर के स्पेस को हम इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं और इस इंटरस्टिशियल स्पेस में इंटरस्टिशियल सेल होते हैं या फिर लेडिंग सेल्स भी बोलते हैं. सो हमें यहाँ पे सिर्फ एक सेमिनिफेरस ट्यूबुल का काम है और इस सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर दो सेल होती है और वो कौन कौन से हैं. तो सबसे पहले आपको जानना है कि इसकी जो प्राइमरी लेयर आपको दिख रही है जस्ट अटैच्ड विथ द सेमिनिफेरस ट्यूबुल, इस लेयर को हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया. तो देयर आर मैनी स्पर्मेटोगोनिया present just contact with the inner lining of seminiferous tubule, and then the Sertoli cell present outside of these cells. There are some Sertoli cells present outside of the spermatogonia. So the marking is important. This is the spermatozoa. Look at this is the sperm tail like spermatozoa. Simply you can say that these are the sperm, and this layer is called the spermatogonia, which divide by meiosis and form the spermatozoa. And then this cell is the Sertoli cell because, and you can see here the sperm are come and contact with the Sertoli cell for their nutrition. So you can say that this is the Sertoli cell. So the important thing is you have to mark this point: interstitial cell, spermatogonia, spermatozoa and Sertoli cell. The next point is the penis is the male external genitalia, you know it, and it is made up of a special tissue that help in the erection of penis to facilitate insemination. Insemination means the transport of a sperm into the female reproductive tract is called insemination, and penis help in the insemination. The enlarged end of the penis is called the glans. Penis is covered by loose fold of a skin is called foreskin, you know it. There are some glands associated with the male reproductive system, included a pair of seminal vesicles. A prostate gland means one prostate gland and paired of bulbo urethral gland. Secretion of these gland constitute the seminal plasma, means the secretion of seminal vesicles, prostate and bulbourethral gland all constitute a seminal plasma, which is rich in fructose, calcium and certain enzyme. तो ये नीट में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सेमाइनल प्लाज्मा होता है उसके पास क्या क्या चीज़ें होती है. तो फ्रुक्टोज होता है, कैल्शियम होता है और सर्टेन एंजाइम्स होते हैं. ये आपको ध्यान रखना है. सेमाइनल प्लाज्मा हैज फ्रुक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम. द लास्ट पॉइंट, द सेक्रेशन ऑफ bulbourethral gland also help in the lubrication of penis. Bulbourethral gland also called the Cowper's gland. And there is a question, if we remove bulbourethral gland, the fertilization will be affected. Why? So bulbourethral gland secrete alkaline fluid for neutralization of vagina before the ejaculation.
अगर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड एल्कलाइन सॉल्यूशंस सीक्रेट नहीं करेगा तो फिर वेजाइना का जो एसिडिटी है वो डिक्रीज नहीं होगा, न्यूट्रलाइज नहीं होगा, और न्यूट्रलाइज नहीं होगा तो एसिडिटी ऑफ वेजाइना कैन किल द स्पर्म। सो इफ़ यू रिमूव द बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, अगर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को रिमूव कर देंगे हम किसी मेल पर्सन से, तो वहाँ पे इंसेमिनेशन के बाद स्पर्म सारे किल हो जाएंगे, क्योंकि वो वेजाइना का जो एसिडिक मीडियम है वो रिड्यूस नहीं कर पाएगा। So bulbourethral gland is important for the fertilization. So there are some extra point I have noted on the NCERT. Seminal fluid is 60 to 70% and seminal fluid contain fructose, calcium, prostaglandin, citrate and fibrinogen. Means prostaglandin, citrate, fibrinogen, you can say it the some enzymes. So given in your NCERT, fructose, calcium and certain enzyme. You have to remember that fructose, calcium and plus certain enzyme is present in the seminal fluid. There is a term semen. Semen means a sperm plus the seminal fluid, means accessory reproductive gland fluids. Sperm and seminal fluid combined to form called semen. The volume of semen is 3 to 4 ml per ejaculation and the pH of semen is 7.3. pH of semen is most important 7.3, which is alkaline. Alkaline nature is important because alkaline nature neutralize the acidity of vagina and sperm will survive, otherwise sperm will kill by the acidity of vagina. So the normal sperm count is, you have to remember that 20 to 120 million per ml. So 200 to 3 million sperm ejaculated. मैंने आपको पहले ही बताया था सर्टोली सेल के फंक्शन, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द sperm or you can say the germ cell and the phagocyte, and they are the basis of the blood testis barrier. Sertoli cell can produce the inhibin, anti-Mullerian hormone and ABP, androgen binding protein. So remember these all the function of Sertoli cell, and also here the Sertoli cell secretes some ABP, AMH, inhibin and form blood testis barrier. One last important point, the prostate gland secretion. Prostate gland secretion is about 30%, which is thick, milky, citric acid, phosphate and fibrinolysin is प्रेजेंट। सो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियोस को लाइक कमेंट्स वगैरह जरूर करो, और नेक्स्ट कौन से चैप्टर्स की आपको लेक्चर चाहिए वो भी कमेंट करो। सो ऑल द बेस्ट, डू हार्ड वर्क एंड बी कंसिस्टेंट फॉर योर नीट प्रिपरेशन।